मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राई टू चेंज द लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो फोर्स लगा के हम लेंथ को चेंज करते हैं, या तो स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, वॉल्यूम को चेंज करेंगे या फिर शेप मटेरियल का चेंज करेंगे फोर्स लगा के, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। Elasticity is that property of a body by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming forces are applied on it and recover its original state as soon as the deforming force are removed. तो elasticity क्या है? वो property जो कि oppose करता है deforming force को shape change करने के लिए, या फिर length को change करने में oppose करेगा, या फिर वॉल्यूम चेंज करने में अपोज करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के वजह से अगर तुमने चेंज किया भी तो वो चेंज को वापस, मतलब अगर जो भी इंक्रीज इन लेंथ हुआ है तो उसको वापस ओरिजिनल लेंथ पे लेके आएगा या ओरिजिनल स्टेट को अचीव करेगा वापस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। नाउ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, सो द बॉडी विच परफेक्टली रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो जब वो रिकवर करना चाहता है अपना ओरिजिनल स्टेट डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, तो कुछ बॉडी पूरा अपना ओरिजिनल स्टेट वापस रिकवर कर लेता है, और दूसरा है देयर आर सम बॉडीज विच डू नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो जो पूरी तरह से अपना ओरिजिनल स्टेट जो है ले लेता है उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है। So the body which perfectly regain its original form on removing an external deforming force is defined as perfectly elastic body. Now, very near example of a perfectly elastic body is quartz. Quartz is a material which is almost nearly perfectly elastic. अच्छा, प्लास्टिक बॉडी क्या होगा? जो अपना शेप को, है ना, परफेक्टली प्लास्टिक वो होगा जो थोड़ा भी, जैसे ही जितना चेंज किया उतने चेंज पे ही रह जाएगा। और प्लास्टिक बॉडी ऐसे जो पूरी तरह से अपना ओरिजिनल स्टेट ना अचीव कर पाए उसको प्लास्टिक बॉडी करेंगे। तो बॉडीज विच रिमेन्स इन डिफॉर्म स्टेट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। प्लास्टिक बॉडीज डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट वापस एक फोर्स जो ओरिजिनल शेप पे लाने के लिए लगता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो ऑन डिफॉर्मेशन, intermolecular force is set up in the body which tends to restore the original configuration of body is called restoring force. So on deformation, intermolecular force is set up in the body which tends to restore the original configuration of body is called restoring force. So when body is deformed by some external force, that is deforming force, intermolecular distances changes. Intermolecular force opposes this change and try to bring the body to original state. तो जब भी बॉडी डिफॉर्म होता है, तो व्हेन बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना, सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंजेस, राइट। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट चेंजेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपोजेस दिस चेंज एंड ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी टू ओरिजिनल स्टेट। अब स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। F अपॉन A हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, है ना। सो स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो इंटरनल F इंटरनल मतलब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। सो F इंटरनल, दैट इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिव्स यू द stress, the value of stress. So where F internal is internal restoring force, and at equilibrium, जब equilibrium होगा तो जो internal restoring force है वो external force के बराबर होगा। तो उस केस में, equilibrium के केस में, हम लोग stress को F external by A भी कह सकते हैं, क्योंकि internal force और external force equal हो रहा है।
Now SI unit of stress is Newton per meter square, है ना. स्ट्रेस क्योंकि ये इसका यूनिट न्यूटन हो गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया स्ट्रेस का. Stress is not a vector quantity since unlike a force, the stress cannot be assigned a specific direction. ठीक है, तो फोर्स की तरह उसका डायरेक्शन नहीं हो सकता है. Stress is therefore not a vector quantity. Now stress is not produced due to deforming force. So deforming force is responsible for strain. So जो भी restoring, जो भी deforming force होगा, that will be responsible for strain, that is change in length and other thing. It is the restoring force which causes stress, right? So if restoring force is absent, material will be easily deformed and almost no stress will be produced. तो क्योंकि restoring force absent है तो stress कुछ produce होगा नहीं, क्योंकि deforming force उसको change कर देगा उसके shape को, और कोई restoring force नहीं लगेगा, कोई opposition नहीं होगा. Stress can be broadly classified in two types. तो पहला है normal stress, ठीक है, और दूसरा shear stress. Normal stress क्या है? When force is perpendicular to surface under consideration, then stress is said to be normal stress. तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर वो सरफेस, जिस सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं. So when force is perpendicular to surface under consideration, then stress is said to be normal stress. It can further be divided into two parts. One is called longitudinal stress and other is called hydrostatic या volume stress. Longitudinal stress क्या है? Stress produced in a body due to change in length is called longitudinal stress. ठीक है. So जैसे जो internal restoring force है, so restoring force perpendicular to the surface of area A when length of body is increased. So longitudinal stress क्या होगा? Internal restoring force by area. So there are two types of longitudinal stress. एक होगा tensile stress और दूसरा होगा compressive stress. Tensile stress जब उसका length increase करता है, so the longitudinal stress produced due to increase in length of a body is defined as tensile stress. तो जब आप इसको खींच के इसके लेंथ को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अंदर के तरफ लगेगा, और उसके वजह से जो स्ट्रेस होता है इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं. दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी. तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे होते हो तो इसका बॉडी का जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, जो ये एफ इंटरनल जो है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना. सो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं. Now note that when a material is under tensile stress, the restoring force are caused by intermolecular attraction. ठीक है, तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब जब उसको उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो जो स्ट्रेस लग रहा है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उसके लेंथ को इंक्रीज करने से रोकेगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसके वजह से ऐसा हो रहा है. While under compressive stress, the force restoring force are due to intermolecular repulsion, right? तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, राइट, तो ये जो फोर्स इधर लग रहा है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, the restoring force are due to intermolecular repulsion. The restoring force is because of the intermolecular repulsion. Now, second example, the ratio of radii of two wires of same material is 2:1, right? If these wires are stressed by equal forces, then the ratio of stresses produced in them will be, so force equal है, right? Ratio of radii of two wires of same material R1 upon R2 is equal to 2/1, right? So ratio of stress
stress 1 upon stress 2 is equal to F by pi R1 square. फोर्स तो सेम है ना, तो F ही रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, F बाय पाई R2 स्क्वायर. देखो F कट गया, पाई पाई कट गया, इसको हम लोग R2 बाय R1 का होल स्क्वायर कहेंगे. R2 बाय R1 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, रेशियो 1:4 का हो जाएगा ऑप्शन 3. तुम ऐसे भी कर सकते थे कि स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इसको भी यूज कर सकते थे. तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 इज R2 बाय R1 का होल स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now volume stress. So if symmetrical compressive and normal forces are applied on surface of a body, then it undergoes change in volume. तो symmetrical compressive and normal forces, तो compressive force रहे, symmetrical रहे, हर तरफ से बराबर force लगे, और normal मतलब surface के perpendicular force लगे, तो उसके वजह से जो है एक there will be a change in volume. If the force is compressing it, the volume will decrease. If the force is uh, pulling it outside, then the volume will increase. So force opposing this change in volume per unit area is defined as volume stress. Now consider a body is surrounded by a fluid having exerting pressure P on body, then change in pressure delta P is treated as bulk stress, या फिर उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं. वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. अब shear stress, whenever there is a relative displacement of successive layers of a body, a restoring force is set up parallel to the surface. Shear stress क्या हो गया? Restoring force parallel to the surface by area of surface. तो एक सरफेस को हम लोगों ने फिक्स कर दिया, दूसरे सरफेस को बाहर इस तरफ पुल करते हैं, राइट? Restoring force parallel to the surface. So this is the restoring force divided by area of surface. वहां perpendicular to the surface था, जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस करते थे, यहाँ पे parallel to the surface है. Now shear stress is measure of opposition offered by a body to change in its shape. Now comparison of pressure and stress. Pressure is always normal to the area, whereas stress, तो देखो तुम को बहुत सारा लॉजिक आएगा भाई, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया तो मतलब प्रेशर ही हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस है. पहला ये डिफरेंस है कि प्रेशर में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेस में कोई जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर भी होता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है. तो जैसे शियर स्ट्रेस के केस में वो टेंजेंशियल है. So pressure is always normal to the area, whereas stress can be either normal or tangential, right? Or pressure on a body is always compressive, whereas stress can be compressive or tensile or shear, right? तो जो pressure है on a body, that is always compressive. Pressure तो हमेशा compressive होगा, force तुम जो लगाओगे. Whereas so pressure on a body is always compressive, whereas stress can be compressive or tensile or shear. अब स्ट्रेन की बात करेंगे. स्ट्रेन इज चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी बाय इट्स ओरिजिनल साइज. जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग देखेंगे डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन साइज बाय ओरिजिनल साइज इज स्ट्रेन. अब लेंथ हो गया तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया. और उसी तरह शेयर स्ट्रेन हो जाता है अगर चेंज इन एरिया ऑफ अ बॉडी बाय ओरिजिनल एरिया कर रहे हैं.
So the form of strain depends upon the direction of applied force. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन लगा रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो सबसे पहला जो टाइप है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. सो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस इसलिए कि जैसे यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल है, चेंज इन साइज बाय ओरिजिनल साइज. तो साइज और ये साइज दोनों का डायमेंशन सेम होगा. लेंथ बात करते हैं तो दोनों लेंथ हो जाएगा डायमेंशन में. तो जो लेंथ और लेंथ का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्टेंट है उसका डायमेंशन 0 हो जाएगा. ठीक है. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी. So longitudinal strain is equal to change in length of the body divided by original length. Okay. So longitudinal strain is equal to change in length by original length. So let L is the length of the body, delta L is change in length of the body. Longitudinal strain will be equal to delta L upon L. So length is generally defined for solids only. Therefore, longitudinal strain is defined for solids only. It is meaningless to define longitudinal strain for liquid and gases. तो बिकॉज लेंथ तो बस सॉलिड के लिए डिफाइन है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बस सॉलिड के लिए डिफाइन है. लिक्विड और गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई रोल नहीं. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हम कह रहे हैं चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे. तो longitudinal strain is measure of relative change in length of a body, and volumetric strain is measure of relative change in volume of the body. So change in volume of the body by its original volume is volumetric strain. Now let V is the volume of body, delta V is change in volume of the body, and volumetric strain will be delta V upon V, right? So this V is the original volume of the body, delta V is change in volume, and volumetric strain will be delta V upon V. तो ओरिजिनल वॉल्यूम V है और हम लोगों ने ऊपर से जो फोर्स लगाया उससे जो वॉल्यूम आया वो V माइनस डेल्टा V आ गया. सो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे. अब उसके बाद shear strain. So shear strain is measure of change in shape of a body. कितना shape change कर रहा है उसके measure को हम लोग करते हैं. When deforming force act in a manner that there is a relative displacement of interatomic planes, shape of the body change. एक plane दूसरे plane के respect में आगे move कर जाता है या पीछे move कर जाता है. There is a relative change. Now figure below shows two forces acting parallel to the surface responsible for changing the shape of a body. These forces are shear forces. तो हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे ऊपर पैरेलल सरफेस के, है ना, और यहाँ पे बिकॉज इसको हम लोगों ने फिक्स कर रखा है इस वाले सरफेस को, तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि इस फोर्स को अपोज करेगा, राइट. तो जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये फोर्स और ये फोर्स बेसिकली शेयर फोर्स है. So forces which are acting parallel to the surface is called shear forces. Now shear strain may be defined as the angular displacement of the surface perpendicular to the applied force, right. तो angular displacement of surface perpendicular to applied force, तो ये है surface जो perpendicular to applied force है, इसका जो angular displacement हो रहा है, right. अब ये सरफेस यहाँ पहुंच गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फाई से हो रहा है. सो बेसिकली shear strain may be defined as angular displacement of surface perpendicular to applied force. In figure below, phi is the shear strain, right. So L is the displacement of surface parallel to the force F.
tan phi is equal to small l by capital L. So ये देखो, ये हमारा स्मॉल l है, this distance divided by capital L. So small l divided by capital L is basically your shear strain. So tan phi is equal to small l by capital L. Now for L very less than capital L, जब ये जो displacement है that is very less as compared to the length of this, then in that case tan phi can be approximated as phi. Tan phi is approximately equal to phi, and phi will be equal to small l upon capital L. अब shear strain जो phi है, shear strain phi is equal to tan phi, that is distance of upper face by distance between two faces. So distance between two faces is capital L, and distance displacement of upper face is equal to small l. तो इसलिए small l by capital L हम लोग इसको लिखते हैं. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है फिगर शोज अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इट्स लोअर एंड इज फिक्स्ड व्हाइल अपर एंड इज फ्री, है ना. ये वाला एंड जो है फिक्स्ड है एंड द अपर एंड इज फ्री. फोर्स एफ एक्स ऑन फ्री सरफेस एट एन एंगल थीटा. तो इस एंगल पे एक फोर्स एफ लग रहा है. So force F acts on free surface at an angle theta with the vertical. Find the longitudinal stress across free surface and shear stress across free surface. तो ये F है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ये F cos थीटा है, पैरेलल टू द सरफेस है वो F sin थीटा है. ठीक है, so F cos थीटा और F sin थीटा, ये हो गया. Now, find the longitudinal stress across the free surface. So we have to find the longitudinal stress across the free surface and shear stress across free surface. So stress अगर हम लोग को निकालना है, stress is F upon A. तो अब ये देखो longitudinal stress will be equal to F जो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय एरिया है. F परपेंडिकुलर सरफेस के क्या है, F cos थीटा अपॉन A हो जाएगा. और उसके अलावा जो shear स्ट्रेस है, shear stress is equal to F parallel upon A. So F parallel is equal to F sin theta upon A. So F cos theta by A and F sin theta by A. क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड डेफिनेशन. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोगों ने जो उसमें भी किया था सीबीएसई में. रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ वायर इज इलस्ट्रेटेड बाय द ग्राफ shown below. So if by gradually increasing the load on a vertically suspended metal wire, a graph is plotted between stress and longitudinal strain, we get the curve as shown in the figure above. From this curve, it is clear that when the strain is small, that is less than 2%, in region OA, stress is proportional to strain. तो ये देखो इस पूरे रीजन में जब strain is less, in that case stress is proportional to strain, and there we will get a straight line curve, right? So इसको हम लोग this is the region where Hooke's law is obeyed.
राइट तो ये पूरे रीजन में हुक्स लॉ इज ओबेड हुक्स लॉ क्या कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ठीक है stress is proportional to strain so this is Hooke's law so Hooke's law is valid in OA in region OA second the point A is called limit of proportionality तो ये जो point A है this is called limit of proportionality इसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहता है स्लोप ऑफ लाइन ओ ए गिव्स द यंग्स मॉडुलस वाई ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इफ थीटा इज द एंगल ऑफ ओ ए फ्रॉम स्ट्रेन एक्सिस देन वाई इज इक्वल टू tan थीटा तो बेसिकली जो हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is equal to some constant that constant is known as Young's modulus so the constant is known as Young's modulus represented by y so y is equal to stress by strain so f by divided by strain अगर longitudinal strain है तो delta L by L so this is f L by A delta L okay. So slope of the line OA gives the Young's modulus. तो यहाँ पे slope क्या है tan theta हो जाएगा जहाँ पे theta क्या है angle made by this stress strain curve with the strain axis. Clear है बच्चों? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो इन द रीजन ए बी है ना ओ से ए पे आ गए अब रीजन ए बी में द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ना स्ट्रेट लाइन नहीं है इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन so in the region AB the stress is not proportional to strain but there will wire will regain its original length after the removal of stretching force तो stretching force को remove करने के बाद wire regain its original shape so but wire still regain its original length after the removal of stretching force. Wire still exhibits elastic behavior up to point B. तो point B जो है ना elastic limit कहलाता है. So beyond B, wire shows plastic behavior, right? So point B is called yield point, and stress corresponding to this point is called elastic limit or yielding stress. In region OAB, wire shows elastic behavior. तो ये जो B point है so this is elastic limit or yield point ठीक है ना this point is elastic limit or yield point ठीक है ना in this region so this region is called elastic region थर्ड वाला अगर हम देखें if the wire is stretched beyond the elastic limit B ठीक है ना so if the wire is stretched beyond the elastic limit B strain increases much more rapidly while in region beyond B say at C if the stretching force is removed the wire does not regain its natural length so length of wire changes permanently so region beyond point B is called plastic region तो ये जो पूरा रीजन है B से इधर वाला रीजन ये पूरा रीजन प्लास्टिक रीजन so if the wire is stretched beyond the elastic limit B strain increases much more rapidly while in region beyond B say at C if the stretching force is removed the wire does not regain its natural length so length of wire changes permanently region beyond B is called the plastic region
Now, if we keep on stretching the wire, a situation comes corresponding to point D. So, if we keep on stretching the wire, a situation comes corresponding to point D where when wire begins to flow and breaks. So, point D corresponds to breaking stress or ultimate stress. Before breaking stress, breaking stress, so before breaking, stress decreases momentarily as intermolecular forces become so large that restoring force becomes too small. So point E is called the fracture point. So elastic limit, basically the maximum stress which the body within which the body regain its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. Now, if the deforming force exceeds the elastic limit, the body acquires a permanent set or deformation and is said to be overstrained. Now, ductile material. So, ductile material, the material which have large plastic range of extensions are called ductile material. So, material which have large plastic range of extensions are called ductile material. तो देखो यहाँ पे जो प्लास्टिक रीजन है, बी के बियॉन्ड जो भी रीजन है ये पूरा प्लास्टिक रीजन है क्योंकि बी इलास्टिक लिमिट है. तो ये जो प्लास्टिक रीजन है पूरा, राइट, डक्टाइल का मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो अगर कोई चीज को अगर हम स्ट्रेच करते हैं वापस अपना शेप नहीं लेता है ना, और टूटता भी नहीं है, तो वो रीजन अगर जितना ज्यादा होगा मतलब वहां पे वो उतना अच्छा डक्टाइल मटेरियल बोला जाता है. तो इसीलिए जो डक्टाइल मटेरियल होगा have large plastic range. Now, as shown in the stress strain curve shown in figure below, their fracture point is widely separated from the elastic limit. Such materials undergo irreversible increase in length before snapping, so they can be drawn into thin wires. For example, copper, silver, iron, aluminum, etc. are examples of ductile material. तो ये जो हमारा है, तो ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट हो गया और ये हमारे इलास्टिक लिमिट हो गया. तो इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. देयर फ्रैक्चर पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम इलास्टिक लिमिट. तो जितना ज्यादा सेपरेशन होगा वो उतना अच्छा डक्टाइल मटेरियल बोला जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ब्रिटल मटेरियल इसका उल्टा है. ब्रिटल मटेरियल मतलब तुरंत टूट जाना चाहिए. मतलब इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जितना कम होगा उतना अच्छा ब्रिटल मटेरियल होगा. So material which have very small range of plastic extensions are called brittle material. So which have very small range of plastic extensions are called brittle material. Such material break as soon as the stress is increased beyond the elastic limit. तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच होगा ये सब्सटेंस जो है ये ब्रेक कर जाएगा. Their breaking point lies just close to their elastic limit as shown in the figure below, right? So breaking point lies very close to elastic limit. तो ये breaking point है, ये elastic limit.
Examples are cast iron, glass, ceramics. Now, elastic relaxation or elastic after effect. So, the property by virtue of which a body does not regain its original form immediately after removing the deforming force, but gains it after some time, is defined as elastic after effect or relaxation. So, the property by virtue of which a body does not regain its original form immediately after removing the deforming force, है ना, बट गेन्स इट आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम लेता है, तुरंत रीगेन नहीं करेगा अपना ओरिजिनल फॉर्म, आ जाएगा अपना ओरिजिनल स्टेट पे, बट इट विल टेक सम टाइम. तो वो जो टाइम लेता है उसको उसको बेसिकली इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट या फिर रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. नाउ इलास्टिक फैटीग. सो व्हेन अ बॉडी, इलास्टिक फैटीग क्या होता है, किसी बॉडी को बार बार तुम स्ट्रेच करो और रिलीज करो, स्ट्रेच करो रिलीज करो, तो थोड़ी देर बाद वो उसका जो इलास्टिसिटी है पूरा इट लूजेस इट्स इलास्टिसिटी टेम्पररली, थोड़े टाइम के लिए. ठीक है, बाद में फिर 2 घंटे छोड़ के उसके बाद फिर से तुम करोगे तो वापस उतना ही इलास्टिक दिखेगा, बट टेम्पररली जो है ना वो कम हो जाता है जो इलास्टिसिटी उसका. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक फैटीग. So when a body is subject to repeated cycles of loading and unloading, it temporarily loses its property of elasticity. This is known as elastic fatigue. Malleability अब क्या है? When a solid is compressed, a stage is reached beyond which it cannot recover its original shape after the deforming force is removed. So this is the elastic limit point A for compression. The solid when behaves like the solid then behaves like a plastic body. The yield point B dash obtained under compression is called crushing point. After this stage, metals are said to be malleable, that is, they can be hammered or rolled into thin sheets. For example, gold, silver, lead, etc. सो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे कंप्रेशन इंक्रीज करता जाएगा, है ना, और यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है और यहाँ पे फिर क्रशिंग पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा. इलास्टोमर्स क्या है? जो the material which can be elastically stretched to large values of strain are called elastomers. ठीक है, सो जिसको बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं. For example, rubber can be stretched to several times its original length, but still it can regain its original length when the applied force is removed. So there is no well-defined plastic region. Rubber just breaks when pulled beyond. Rubber just breaks when pulled beyond a certain limit. Its Young's modulus is very small, about 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square at slow strains. Now, elastic region is in such cases is very large, but the material does not obey Hooke's law. Elastic region होगा इसमें जितने elastomers होते हैं, but ये Hooke's law को follow नहीं करता है. In our body, the elastic tissue of aorta, ठीक है, the large blood vessel carrying blood from the heart is an elastomer for which the stress strain curve is shown in the figure. Now, इसी पे इलास्टिक हिस्टेरेसिस डिफाइन हुआ है. हिस्टेरेसिस, अगर एक्चुअल हिस्टेरेसिस की बात करें जो हम मैग्नेटिज्म में बात करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बाद में बार बार करते हैं किसी भी ये जो डिवाइस है, तो उसमें तो अगर हम लोग जो है यहाँ पे तो क्या इलास्टिक हिस्टेरेसिस हो रहा है. इन जनरल हिस्टेरेसिस में मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो पाथ होगा मैग्नेटाइजेशन का और डीमैग्नेटाइजेशन का जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ सेम नहीं होता है. मैग्नेटाइजेशन के समय कुछ और
फॉलो करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन के समय कुछ और फॉलो करेगा पाथ। सेम चीज यहाँ पे भी इलास्टिक हिस्टेरेसिस में भी। So in most materials, stress strain curve while loading and unloading do not follow same path. While unloading stress decreases faster than strain. In another word, strain lags behind the stress. तो देखो जब अनलोडिंग होगा, है ना, तो ये फॉलो होगा, स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस। और जब लोडिंग हो रहा था, है ना, तो strain is more than the stress is more than the strain. So the lagging of strain behind the stress is defined as elastic hysteresis. Work done while loading is not fully recovered while unloading. So some of the energy is lost in the form of heat. So we can draw stress strain curve while loading as well as while unloading of a given example. For materials showing hysteresis curves while loading and unloading. Okay, so for materials showing hysteresis, curves while loading and unloading do not match. Loading का कोई और कर्व होगा ऊपर वाला, अनलोडिंग का जो नीचे वाला कर्व है वो होगा। अब यही ये hysteresis loop बनता है, right? So for material showing hysteresis, stress strain curve for complete cycle of loading and unloading forms a closed loop. This loop is called hysteresis loop. तो ये जो पूरा loop आपको दिख रहा है, इस loop को hysteresis loop कहते हैं stress strain में। Area enclosed by hysteresis loop is numerically equal to energy lost per unit volume per cycle. So energy lost per unit volume per cycle. This is area enclosed by hysteresis loop. Now, materials having large area of hysteresis loop are used to absorb vibration. ठीक है, जिसका large area of hysteresis loop are used to absorb vibration of the machinery, as vibrational energy will be converted into heat. And material A having more area of loop is suitable for this purpose. Hysteresis loop of car tires should have small area like material B so that they do not get heated up excessively. Now, elasticity restoring forces are strictly conservative only when elastic hysteresis is zero. That is, the loading and unloading stress strain curves are identical. The material which has low elastic hysteresis has also low elastic relaxation time. Now, breaking stress. The stress beyond which material breaks is called breaking stress or ultimate strength. So breaking stress क्या हो जाएगा? Breaking force by area of cross section, और breaking force is breaking stress into area of cross section. Breaking stress depend करता है nature of material पे, temperature पे, impurities पे. Breaking stress does not depend on cross section, area of thickness and applied force. Breaking force or maximum load that can be applied on the wire depends on cross-sectional area or thickness, nature of material, temperature and impurities. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes. Now let us do some questions. कह रहा है 1000 kg lift is tied with a metallic wire of maximum safe stress of 1.4 into 10 to the power 8 Newton per meter square. एक लिफ्ट है, इसको हमने एक वायर से टाई करके रखा है, मैक्सिमम जो इसका मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस है 1.4 इंटू
So F upon A is 1.4 into 10 to the power 8 Newton per meter square. ठीक है ना? So ये फोर्स इस पे लग रहा है, मान लो टेंशन T लग रहा है तो इसको टेंशन T ही लिख लो, T upon A is this. Now, if the maximum acceleration of the lift is 1.2 meter per second square, then the minimum diameter of the wire is, हम लोग को minimum diameter निकालना है, तो maximum safe stress, तो अब ये देखो जब ऊपर एक्सेलरेट करेगा तभी मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, क्योंकि फोर्स टेंशन तभी मैक्सिमम होगा, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका वेट एक mg है और उसके अलावा एक स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा ma इधर, तो T इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ ma हो गया. ठीक है. So this is the tension T is equal to mass 1000 kg है into g plus a, g है 9.8 और acceleration है 1.2, 11,000. Tension T is equal to 11,000 Newton, right? Now we have to find the minimum diameter. तो देखो T by A is 1.4 into 10 to the power 8. T is 11,000 by pi d square by 4 is 1.4 into 10 to the power 8. So this will be equal to 11,000 divided by 1.4 into 10 to the power 8 is equal to pi d square by 4, or d square is 4 into 11,000 by 3.14, 1.4 into 10 to the power 8. So d is equal to root under 44,000, 3.14, 1.4, 10 to the power 8. इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 44,000 डिवाइडेड बाय into 1. So D is equal to 0.01 meter. Option 3. Clear बच्चों? एक मिनट बच्चों. Yes, sir.
हाँ सॉरी बच्चों, ये सब लोगों ने लिख लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So two blocks of masses 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The breaking stress of the metal is 2 into 10 to the power 9 Newton per meter square. ये 10 to the power 9 है. ठीक है. सो दो ब्लॉक है, एक 1 kg का है ब्लॉक इधर और इधर 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, कनेक्टेड बाय मेटल वायर गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली. ये एक मेटल वायर है जो उस पुली के ऊपर से जा रहा है. The breaking stress of the metal is 2 into 10 to the power 9 Newton per meter square. What should be the minimum radius of the wire used if it is not to break? Take G is 10 meter per second square. तो अब देखो नॉर्मल पहले तो टेंशन निकालेंगे. टेंशन निकालने के लिए दोनों तरफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. ये mg है, ये टेंशन t है, राइट? और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है और ये मान लो m डैश है, तो m डैश g हो गया और ऊपर टेंशन t हो गया और ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है. 1 kg वाले ब्लॉक के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोग लिखेंगे t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है. और इसके लिए 2 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a. ऐड कर देंगे दोनों को, प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, 2g minus 1g. So this is 2g minus 1g is g is equal to 3a और acceleration is equal to g upon 3 हो गया. So acceleration g upon 3 हो गया, that means 10 upon 3 meter per second square. Tension t करोगे, this is equal to g plus a, that is g plus g by 3. So 10 plus 10 by 3, 30 plus 10, 40 by 3. Tension T is equal to 40 upon 3. So what should be the minimum radius of the wire used if it is not to break? Okay. So तो अब देखो हमारा टेंशन निकल गया. अब ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन टी अपॉन एरिया और टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉरी टी अपॉन पाई आर स्क्वायर जो एरिया हो गया. सो हम लोग को आर निकालना है. सो देखो ये स्ट्रेस मैक्सिमम मतलब रेडियस मिनिमम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन पाई इंटू जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर टी अपॉन पाई इंटू स्ट्रेस. तो दिस इज रूट अंडर टी, जो टेंशन है हमारा निकला 40/3 डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इंटू स्ट्रेस जो है 2 इंटू 10 टू द पावर 9. तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 40 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 40/3 40/3 divided by so this is 4.6 into 10 to the power -5.
So radius is equal to 4.6 into 10 to the power minus 5 meter. This is the radius. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ना अब हुक्स लॉ देखेंगे. हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट stress is directly proportional to strain, है ना? और stress upon strain is equal to some constant E, which is called elastic modulus of elasticity basically. Modulus of elasticity. ठीक है. Now, like Boyle's law, Hooke's law is one of the earliest quantitative relationship in science. Hooke's law is valid only in the linear position of the stress strain curve. So Hooke's law is valid only in the linear position. यहाँ पे O से लेके A तक जो हम लोगों ने बनाया था वहीं तक है. ठीक है. उसके बाद जो ये कर्व होता है वहां पे नहीं, इलास्टिक लिमिट तक नहीं, B तक नहीं, O से लेके A तक ही Hooke's law is valid. Law is not valid for large values of strains. Third, the volume of modulus of elasticity depends on the type of material and temperature. It does not depend volume value of होगा. So value of modulus of elasticity depends on the type of material and temperature. It does not depend upon the value of stress and strain. The SI unit of modulus of elasticity is Newton per meter square. है ना? स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, बच गया स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. और डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 हो जाएगा. टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ये तीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट longitudinal stress and longitudinal strain are constant in ratio, which is called Young's modulus. So Young's modulus of elasticity is basically longitudinal stress by longitudinal strain. So Y is equal to F by A divided by delta L by L. So F into L by A delta L. So this is delta L is equal to F into L by A into Y. So F is equal to YA by L, right? So into delta L. तो अगर हम लोग को फोर्स निकालना होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स निकालना होगा, तो यंग्स मॉडुलस ये है, रिस्टोरिंग फोर्स का ये हो जाएगा. यंग्स मॉडुलस ये हो गया, डेल्टा एल ये हो गया और एफ का वैल्यू ये हो गया. तो तुम एक बस, हम तो बेसिकली यही याद रखो, है ना? बाकी तो उस समय डिराइव कर लेंगे जो जो चीज निकालना है उसके हिसाब से. SI unit of Young's modulus is Newton per meter square. Effect of temperature on Young's modulus. When temperature is increased, elastic properties in general decreases. That is, elastic constant decreases. So plasticity increase with temperature. Now, effect of impurity on Y is slightly increased by impurity. है ना? जो Young's modulus of elasticity है. The intermolecular attraction force inside wire effectively increased by impurity. Due to this,
external force can be easily opposed, defined only for solid and not for liquid or gases. For a special kind of steel, elastic constants do not vary appreciably with temperature. This steel is called inverse steel. Now measurement of Young's modulus, ये experimental verification हम लोग को करना नहीं है ना? ये कुछ मटेरियल्स है उनका यंग्स मॉडुलस दिया है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तुम लोग एक बार रीड कर लेना है इसको. कुछ मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, ब्रेकिंग स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट वगैरह दे रखा है. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग बेसिकली यंग्स मॉडुलस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. ठीक है, ठीक है बच्चों. यस सर. चलो, ठीक है. सो आप लोग का होमवर्क वही है कि ना ग्रेविटेशन का पूरा एच वर्मा खत्म कर लीजिएगा, और मैं देखूंगा अगर कोई डीपीपी है तो एक डीपीपी भी भेज दूंगा जिससे तुमको प्रैक्टिस मिल जाए अच्छे से ग्रेविटेशन का. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Thank Thank you, you, sir. sir. थैंक यू सर.